I think fluid dynamics, whatever. Let's do it. First question. A large tank filled with water. Okay, density कितनी दी है? 10 power 3 जो भी है. Sorry, the density of water is just 10 power 3. Okay. A small hole is made at depth h. Okay, 10 meters. So, right. Below the water surface, the range of water is showing out of the hole is r on the ground. What extra pressure must be applied on the water surface so that the range becomes 2r? Okay. So we know that square root of 2gh is the velocity of the thing leaving out, right? यहाँ मतलब बर्नौलीज थ्योरम जनरल लगाते हैं हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर दोनों सेम रहने वाले जस्ट लाइक रो जी एच व्हाटएवर. सो वी इज रियली जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग. ओके, तो अपने को ये पता है कि क्या वेलोसिटी में छोड़ रहे हैं और ये सपोज लाइक ये जो डिस्टेंस इसको अपन कैपिटल एच बोल देते हैं, राइट? सो ये जो डिस्टेंस दैट्स लाइक आर. वेट, टाइम पीरियड सेम रहेगा जो इसको नीचे गिरने के लिए लगता है. सो अगर मेरे को 2r करना है अपने को इसको डबल करना पड़ेगा. सो h को राइट 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 आई शुड रियली से इट्स लाइक तो अगर वहां पे अपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया टॉप पे तो फिर p प्लस रो जी एच आ जाएगा यहाँ पे, राइट? सो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग. सो v is in fact like square root of 2 times of p upon rho plus gh, right? तो अपने को ये जो चीज है दैट शुड बी जस्ट दिस शुड बी 4 times of this thing. So p upon rho plus gh is equal to 4 times of gh, यानी कि p is just 3 rho gh. So ये इतना एक्स्ट्रा प्रेशर अपने को लगाना है. डेंसिटी अपने को दी है, ग्रेविटी दी है 10 है और राइट. So 10 power 3 and then what's the density? Density is just कर 3 and then g कितना है 10 and height भी just 10 है. So like 3 times 10 power 5 यानी कि 3 एटमॉस्फेयर. So इसका आंसर डी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड है the gravitational field at a distance of r upon 2 to the center of the uniform solid sphere of mass m and radius r is अच्छा r upon 2 from a center of the uniform solid sphere of, तो ठीक है ना, g m upon r square रहती है at surface और क्या अपने को उसको right, it's proportional to r, right? It's linear to r in fact. So it's like r upon 2 upon r of that thing. So it's going to be just 1 upon 2, right? So gm upon 2r squared यानी कि सेकंड का आंसर C. नेक्स्ट क्वेश्चन. Third is three immiscible liquids L1, L2, L3 of density something, okay, are floating one above the other in a container and depth of each liquid is D. 3 liquids है रो, okay, ठीक है. A liquid of radius r and density 2d floats in vertical position in the equilibrium. Okay, in equilibrium length of cylinder is L1, okay, L1, L2, L3, fine. L1 L3 d upon 2 है. रॉन्ग स्टेटमेंट हमको चुनना है. ओके, वन अबाउट द अदर इन कंटेनर ऑफ डेप्थ. ठीक है, ठीक है. सिलेंडर ऑफ रेडियस r and length 2d whatever. अब हमें करना क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय L2 ऑन द सिलेंडर. फोर्स अप्लाइड, सो सेकंड लिक्विड से फोर्स अप्लाइड बाय, ओके, L2 is 0. वेल आई गेस नहीं एक्चुअल में, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा ना. सो इट्स गोना राइट, buoyant force upward रहेगा इस पे. बट वेट, isn't it like it is actually 0, right? So तुम अगर इसको ब्रेक करते then it would be like 0 नहीं होता, बट एक्चुअल में 0 ही है. सो जो फोर्स है वो कंप्लीटली L3 और L1 भी लगा रहे. सो L3 से जो प्रेशर आ रहा है और L1 से जो प्रेशर आ रहा है अपने को उनको ही देखना है, राइट? या सो हाँ, A is somehow correct. Okay. और क्या है? Force applied by L1 on the L1 on the liquid is in upward direction. No, that's wrong. Force applied by L3 on the liquid is in upward direction. That is correct, in fact. Right. So it is actually in upward direction. C is correct. अपने को wrong statement चाहिए. Okay, then B is the wrong statement. और क्या है? Density of the material of the cylinder is 13 rho upon 4. कितना? Like 1 upon 2 है इसमें पहले तो, right? Because half volume. And then density of the material minus rho 1 and then plus 1 upon 2. Rho 1 कितना? Just rho है basically, right? उसको T बोल दो जो भी है. अच्छा, तुमने density rho दी है.
लाइक दिस। ठीक है जो भी है। और क्या है नीचे वाले के लिए है हाफ एंड देन रो माइनस 6 रो लाइक दिस थिंग और फिर प्लस 1 टाइम्स सॉरी ओके ये चीज so ये एक्चुअली में अलग होना चाहिए इट्स लाइक दिस वेल वॉट एवर नेक्स्ट इक्वल टू 0 सो यहाँ से एक दो और दो और मतलब चार डेंसिटी इज इक्वल टू ये चीज प्लस ये चीज प्लस 2 टाइम्स यानी कि 6 टाइम्स ऑफ दिस थिंग एक्चुअली आई गेस दैट्स सपोज टू बी 12 13 ये चीज और मतलब ये हो जाएगा ये 13/4 हो दैट मेक्स सेंस ओके सो दिस इज करेक्ट और क्या है if the so ठीक है D इतना right next fourth if a pinhole is made in a barometric tube below the free surface of the liquid in the tube so barometer कैसा रहता है by the way it's just basically दो कप्स है एक कप को तुमने इन्वर्टेड डाला यहाँ पे वैक्यूम है by the way और ये ऐसा है right okay if a pinhole is made in the barometric tube below the free surface of liquid मतलब कि यहाँ पे right like this wait below the free surface what do you mean by that बैरोमेट्रिक ट्यूब यू से तो मतलब ये जो ट्यूब है वो ओके राइट दैट्स बैरोमीटर ऑफ कोर्स बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब यहाँ पे ओके देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज मर्क्यूरी विल फ्लो आउट ऑफ द ट्यूब देयर विल बी नो चेंज इन लिक्विड लेवल इन द ट्यूब मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पे प्रेशर 0 है राइट यहाँ का प्रेशर पी नॉट है राइट तो जब से वो ऊपर जा रहा है ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे प्रेशर कम है यहाँ पे प्रेशर एक्स्ट्रा है मतलब कि मर्क्यूरी अंदर दब जाएगा बेसिकली इज दैट राइट ओके नो चेंज लिक्विड लेवल इन द ट्यूब लिक्विड लेवल विल कम डाउन टू द फ्री सरफेस इन द कंटेनर come down to the hole only of course C right because ये pressure like जैसे गैस अंदर आएगी then it's gonna be yeah okay I guess that makes sense but ये अजीब नहीं है क्योंकि like okay मर्क्यूरी को हटना पड़ेगा उसके लिए and then फिर हवा अंदर आएगी right yeah but of course this pressure is actually higher so that's interesting very interesting right मतलब liquid बाहर नहीं निकल रहा है but oh come on this pressure is higher this must be something that happens जो भी है so liquid will come down to the free surface in the container I guess so C is the thing अगर यहाँ पे एक छेद किया होता है would have completely understood क्या हो रहा है right then yes liquid would have come down but अपन ने यहाँ पे किया है so या तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ या फिर liquid yeah मे बी अपने को सरफेस टेंशन वगैरह इसमें इंक्लूड करना चाहिए बट वॉट एवर नेक्स्ट इसे लिखिए देता हूँ ना और अपना सेकंड चॉइस क्या है और बी ओके फिफ्थ इज an artificial satellite of mass m is moving in a circular orbit at a height h okay equal to the radius r of the h animal using the of the earth suddenly due to internal explosion in the satellite okay the satellite breaks into two parts of equal masses one mass of the satellite stops just after the explosion and then falls to the surface of earth the increase in mechanical energy of the system satellite plus earth due to the explosion will be okay so मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो स्टिल सेम है इनफैक्ट बिकॉज वो मास वही के वही है ये जो मैकेनिकल एनर्जी राइट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गई राइट ओके ठीक है अपन इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं during explosion the satellite breaks into two parts of equal masses एक पार्ट स्टेशनरी है और एक पार्ट जा रहा है with of course 2 times the velocity of what it initially was right so suppose velocity v थी initially इसकी v naught velocity थी which we can actually calculate as just square root of gm upon r small r by the way which is actually like 2 capital R right so अपने करना क्या just want like half m so अपने को loss in yeah we just want the increase in magnitude okay that's different so right और mass total कितना है mass m so half of m upon 2 times 2 v naught का square ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ ऑफ m टाइम्स v नॉट का स्क्वायर मतलब कि क्या m v नॉट स्क्वायर टाइम्स 4 अपॉन वो तो कैंसिल हो जाएगा इसको भी 1 माइनस 1 अपॉन 2 आई गेस राइट इसको भी हाफ m v नॉट स्क्वायर
I guess that makes sense. Uh, yeah, that should make sense. मतलब और क्या? So right, once that's done, अब देखो सिर्फ इसमें v not put करना है, then you get the thing. So 1/2 m times g capital M upon 2r मतलब क्या? That's the thing. Oh, अपने को ग्रेविटेशनल में लिखना है, so ये ऐसा कर डालता हूँ मैं इसको, and then this whole thing is just g. So mgr upon 4. So C is the answer. Next question. Sixth. चलो चलो चलो. Sixth is a liquid stands at the plane level in the U-tube when at rest. If area of cross section of both liquids, both the limbs are equal, what will be the difference in the height edge of the liquid in the two limbs of U-tube when the system is given an acceleration a in the horizontal direction towards right? तो ये a ऐसा है, and then अपने को चाहिए difference in the height edge of the liquid, और initially capital H height है इसकी, and right, okay. So initially pressure increase मिलेगा rho g h, right? So rho g times दो लिक्विड्स नहीं है ना, सेम लिक्विड है नहीं. Okay, both limbs are equal. What is the difference in the height edge of the liquid with the two limbs of the U-tube? Okay, when the system is given an acceleration a in this direction, right? So according to ये चीज acceleration में ऐसा है, right? Which means कि you know ये सारे particles ऐसे accelerate होने वाले हैं, मतलब कि तुम जैसे ऐसे जाओगे तो pressure increase होने वाला है. So yeah, this is how it's going to be. Pressure increase हो रहा है, pressure increase हो रहा है, pressure increase हो रहा है. फिर यहाँ पे pressure decrease हो रहा है, decrease हो रहा है, decrease हो रहा है. Yeah, so यहाँ पे height बड़ी रहेगी. Of course, like rho g and then you got delta h जो भी height का change हुआ होगा, that's equal to rho g l, sorry rho a l, right? Because वो pressure अब build up हुआ है in fact. Yeah, that should be the thing. Right, मतलब ये जितना नीचे है वो हो जाएगा अपने आप. Don't worry about that. Yeah, and assuming कि दोनों यहाँ पे atmosphere से open है, I guess. Okay, and that just means delta H is just equal to A upon G times L. Okay, so वो कहाँ मिलेगा मुझे? A upon G. That's gonna be B answer. Next question. Seventh. इसको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं. Seventh question is two soap bubbles of radius 3 centimeter 4 centimeter coalesce to form simple bubble under the isothermal conditions, and the radius of the bigger bubble is isothermal conditions. You're saying taking surrounding pressure equal to 0. Okay, so radius अपने को दिया हुआ है, like okay, तो R1 R2 radius initially थे, अब वो मिलके right, okay, isothermal conditions you're saying form a single bubble. Wait, you're seeing a single bubble, not a double bubble, right? Oh, then it's doable, right? So अपने को पता है जो moles रहते हैं, जैसे N1 that's equal to like okay, it's PV upon nRT रहता है, ऐसा PV equal nRT, so N is equal to PV upon RT. So जो भी इसका प्रेशर रहने वाला है, जो कि अपन निकाल सकते हैं, एक्सेस प्रेशर, right? This is like two bubbles है ये, right? 40 upon R, right? Okay, P, and then you got volume, so that's gonna be 4/3 of pi r cube. Okay, upon capital R, gas constant times temperature, right? So N is just equal to ये चीज, yeah. What is this thing? Is proportional to R square is all we need, right? So what does that mean? That means कि yeah, right, like R1 square plus R2 square that's equal to final जो R square था, that thing, R3 बोल देते ना, right? So इस केस में क्या होगा? R3 will just be 5 centimeters. So इसका आंसर D. Next question. 8. चलो 8th question करना है. Okay, a ball of mass 10 kg, density 1, blah blah blah. Okay, attracted to the base of a container having liquid of density something with the help of लिख देना. So density of जो ball है वो कितनी है? 1 gram per centimeter cube. Okay, और मास कितना है? 10 kg. Okay, cool. Attached to the base of container having a liquid of density. So density of the liquid, water जो भी है, density of liquid is 1.1 gram per cc. Okay, with the help of spring as shown, the container is going upward with an acceleration of 2. Okay, the spring constant K is 200. The elongation in the spring is, so अपने को सेंटीमीटर में चाहिए, इसको पहले तो अपन कन्वर्ट करेंगे. So like 10⁻³ 3 upon cc यानी कि कितना?
till meter, right? So 1082 का क्यूब यानी कि 1086 हो जाएगा यहाँ पे. It's like 1000. तो ये 10 power 3 है, it's like 1. हाँ ठीक है ना. So 1100 11 times 10 power 2 तो whatever. Okay, so अपने को अब ये सब पता है. Now let's do the thing. अपने करना क्या है वैसे? Spring से तुमने इसको attach किया है and it's like this guy is going up with the acceleration of this thing. If the spring constant of the spring is the elongation in the spring will be. Oh, fine. So right, like okay, ये ऊपर जा रहा है मतलब कि gravity increase हो गई by that much. So yeah, like effective gravity is 12 basically. Is that correct? I guess it should be. Exactly, it should be correct. So effective gravity is 10. So like 10 times जो भी इसकी, yeah, 10 times इसकी जो वॉल्यूम रहेगी. अब तो डेंसिटी दी है ना, मास भी दिया इनफैक्ट. रेडियस, गॉड नो, नॉट लाइकिंग दैट. टाइम्स इसकी जो भी वॉल्यूम रहने वाली है टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल जो भी है. दिस इज द राइट, इसको जी इफेक्टिव बोले तो ना इनफैक्ट क्या करें, G effective, right? This thing is going to be equal to the force, point force on this kx equal, right? So x is just equal to, हाँ ठीक है ना. पहले तो अपने को वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा. वॉल्यूम इज जस्ट द मास अपॉन डेंसिटी, सो यू कैन डू दैट थिंग. Sorry, is, yeah, okay, mass upon, what am I doing? Density of the ball, right? तो ये हो जाएगा gc, sorry, g effective just 10, sorry not 10, 12 because yeah, times इसका mass which we figure out to be 10, okay, times so rho w upon rho ball, मतलब ये चीज upon ये, this is 1.1 minus 1, okay, that's equal to k कितना है 200 times x. ये हो जाएगा 0.1, ये गया 12 is equal to 200x. X is just equal to 12 upon 200 meters, which is like, okay, this many centimeters, okay, 6 centimeters. So C is the answer. Next question. Ninth question. A tube is shown in the tube of uniform cross section. ठीक है. Liquid flows through it constant speed in direction shown. Okay. Liquid exerts on the tube a net force, torque, और क्या क्या टॉर्क और तुम्हें फोर्स चाहिए, राइट? ओके, सो इस ट्यूब पे व्हाट इज लिक्विड एक्सर्ट ऑन इट, राइट? कांस्टेंट स्पीड इन द डायरेक्शन शोन इन द एरोस. या द प्रॉब्लम इज लाइक, ओके, तुम्हें ट्यूब का इतना ही सेक्शन लेना है ना, और कुछ नहीं लेना है. सो तुम्हारा यहाँ से राइट मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, या ऑफ कोर्स सिर्फ ये पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, ये जो पूरा है स्टेडी स्टेट है, सो फॉरगेट अबाउट दैट. Just have to look for this thing. So yeah, and then it's going out. So it's a zero force. So yeah, net force क्या है, zero, right? But torque zero नहीं होगा ना, because यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे ये मुड़ रहे हैं. So एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें ऐसा नॉर्मल पड़ रहा होगा. So a normal in that direction. Similarly यहाँ पे normal in that direction है, और ये सेंटर ऑफ मास है. So एक्चुअल में right, it's an anti-clockwise. Wait, अच्छा वो तो पार्टिकल्स पर है, अपने को इस पे चाहिए ना, तो उस पे नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा, इस पे ऐसा लग रहा होगा. So actually it's clockwise torque. मतलब कि C is the answer. Next question, 10th. Yeah, of course, it's gonna rotate like that. Sure. 10th. A sphere of mass m and radius r2 has a concentric cavity of radius r1 as shown in the figure. The force F exerted by the sphere on the particle of mass m located at a distance r from the center of sphere varies as. So 0 is less than r. Okay, ठीक है. तो concentric cavity of radius r1 is shown. हाँ ना, तो पहले क्या होगा, पहले तो ये जस्ट जीरो रहने वाला है फॉर सम मोमेंट ऑफ टाइम. उसके बाद में लीनियरली इंक्रीज होगा आई गेस. सो यहाँ पे जैसे आएगा, राइट, इसका मास अभी भी जीरो है, सो इट्स लाइक इट्स कंटिन्यूअस. ऑफ कोर्स इट्स गोना इंक्रीज लीनियरली, राइट, एंड देन आफ्टर दैट देखो फील्ड देखिए ना, ऑफ कोर्स, एंड दिस इज जस्ट राइट. सो ये लीनियरली इंक्रीज होता है, मतलब कि यहाँ पे जीरो रहेगा और फिर धीरे धीरे करते 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 फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन जस्ट लाइक 1 अपॉन r स्क्वायर जैसे बिहेव करेगा. सो फॉर सम टाइम लीनियर एंड देन 1 अपॉन r स्क्वायर. सो आई गेस C इज करेक्ट, ऑल्दो ये लीनियर लग नहीं रहा है. सो C इज द आंसर. वेट, ओके, ये A है, ये B है, सो ये B है एक्चुअली. फाइन. 11th करते हैं. अ सैटेलाइट इज मूविंग in a circular orbit around the earth with a diameter of 2r. At a certain point a rocket fixed to the satellite is fired such that it, wait, 2r, oh that's weird.
R is not the radius of Earth, huh? Okay. Okay, at a certain point, a rocket fired to satellite is okay. Rocket fixed to satellite is fired such that it increases the velocity of the satellite tangentially. The resulting orbit of the satellite would be same as before, circular orbit with diameter greater than 2r. I mean, we know like v is just, oh wait. Velocity increase over, right? But it's still actually in it's an elliptical orbit, of course. It's an elliptical orbit with right यहाँ पे इसने velocity increase कर दी है and which means कि इसको रोकना मतलब उस orbit में रखना मुश्किल है. It's gonna go like it's gonna go increase its r value. So ये जो है that's the minimum. Yeah, that's the minimum thing in fact. Right now इसका r dot 0 है, so it's like at one of the extreme points. So ये ऐसा है जहाँ पे उसने लॉन्च किया होगा, that's this point. तो यहाँ पे इसका r dot 0 था, यहाँ पे इसका r dot 0 है. This is the earth और at this point इसका r double dot जो है that's actually positive, so ये increase हो रहा है and then यहाँ पे yeah okay you get the idea, right? It's on an elliptical orbit like this. So minimum distance from center of earth equal to 2r. Wait, diameter 2r, so it's going to be actually capital R. Right, so see is the thing. Next question. 12th. 12th is a small opening near the bottom of the vessel shown in the figure has an area A. A disc is held against the opening to keep the liquid from running out. क्या in the bottom of the vessel? कौन सी इस vessel में? Okay, shown in the figure has area A. Okay, a disc is held against the opening to keep the liquid from running out. F1 with the net force on the disc applied by the liquid and air in this case. Okay, now the disc is moved away from opening a short distance. Liquid comes out and strikes the disc elastically. Okay, inelastically. Right. Let F2 be the force exerted by the liquid in this condition. Then F1 upon F2 is. Okay, so F1 is just, your pressure difference at that time's area, right? So F1 is just, right, like delta P. Isko P bolo, in fact, delta P ki that time's the area, right? Of course. That's the thing. ओके और फिर उसके बाद में क्या उसके बाद में तुमने इसको थोड़ा सा आगे ले लिया सो ये राइट इट्स गोना कम आउट सो व्हेन इट कम्स आउट right what's the velocity with which it comes out so yeah it's something like rho g sort of 2 rho g h और p अपन in fact निकाल सकते हैं right so what's the yeah okay it's gonna be like square root of square root क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ ऐसा just gh times rho that is the pressure that times area okay और velocity क्या रहेगी square root of 2gh right yeah and that's the velocity so that times the area that's going to be the volume flow rate that times density is the mass flow rate that times velocity once again this is square कर डालो that is the momentum flow rate whatever and right हाँ so momentum flow rate is a force basically right हाँ the thing is like it's not 2 times of that because elastically नहीं हो रहा है it's inelastic अगर elastic होता है it's like gonna yeah तो हर एक में 2 mv होता है ना and that's why it would be having 2 times of that but ऐसा होने वाला है in fact yeah F2 is just equal to 2 rho GHA, right? So F2 is equal to 2 times of F1. F1 upon F2 is just A. Sure. Next question. Yeah, that's how it's supposed to be. Right. Is that not correct? It must be. Oh. Yeah, hydrostatic pressure come okay, I get that. It's just the particles hitting it that matters, doesn't it? Sure, so then that's correct. Next question. 13th. A small hole is made at the bottom of symmetrical jar as shown. A liquid is filled into the jar up to a certain height. The rate of descension of the liquid is independent of the level of liquid in the jar. Wait, what? Rate of descension of liquid is independent of the level of liquid in the jar. Then the surface area of the jar is a surface of what? Sorry, क्या? Small hole is made at the bottom of the symmetrical jar as shown. Liquid is filled into the jar up to a certain height. The rate of descension of liquid. So I think ये जो height है वो increase होना. Okay. Yeah, is independent of the level of liquid in the jar. Or does it mean the volume flow rate? I don't know. Then the surface of jar is the surface of revolution of a curve
दिस इज वेरी वियर्ड। और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ओके। Surface of the jar. Oh, okay. Now I get what you're saying. Mm-hmm. Right. So at any given moment, अच्छा ये x and I'm assuming कि ये y होने वाला है, right? So surface of evolution about this. Okay, that's x. This is y. Makes sense. Sure. But okay, so x की दो वॉल्यूम्स पे सेम y आ रहा है. That can happen. No big deal. Right. So at some particular value of y, exactly हो क्या रहा है, you know, ये height, yeah, okay, that makes sense. Like square root of 2gh is the velocity with which it will leave, and what you're saying is that the rate of descension of liquid is independent of the level, and probably by that I just mean like dh upon dt is independent of that. So this thing is just equal to what, ये जो चीज है, times area, of course. This is equal to dv upon dt, and what we want is dh upon dt, right? So ये जो भी area होगा, right? So इसको मैं x बोल रहा हूँ, like pi x square is the area, I guess, because radial symmetric है. So this area times dh is basically our dv, isn't that right? So dh is dy बोलना चाहिए, यहाँ पे y आ जाएगा, right? Okay, so this is the thing, and this upon dt, that is basically our dh upon dt, right? Okay, that's actually dv upon dt, sorry, this whole thing. कर दो support, so pi x square dy upon dt is equal to a square root of 2g y, and right, and it should be independent of right, okay, that thing. So dy upon dt must be actually constant. That's what we're saying, isn't it? What does that mean? That means like square root of y upon x square must be some kind of constant, so it's equal to k. So y is equal to some constant times x power 4, basically. So yeah, a is the thing. Next question, 14th. पता नहीं कितना टाइम गया होगा यार, अभी मैं स्लो क्यों हो गया हूँ, ऐसे क्रूशियल मोमेंट में मैं स्लो नहीं हो सकता. There are two identical small holes of area of cross section A in the opposite sides of a tank containing a liquid of density rho. Opposite sides, okay. The difference in the height between the two holes is h. Horizontal force that will have to be applied on the tank to keep it in equilibrium is. अच्छा ठीक है समझा. So you know, right. So the change in, right, okay. और दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया सेम है ना, right, okay. So a times of square root of 2g 2 rho g, in fact common ले लो. So yeah, okay, and then times density, of course, and then times the velocity once again. Okay. Oh god, इतना घटिया ये. Difference in the height is h. Volume flow rate times velocity, that's the thing. That's our force basically, right? Sure, and that's exactly the force applied on this guy as well. What else? Come on. And what is the force, like suppose normally अपन करते सिर्फ एक होल के लिए, it's gonna be area times square root of 2 rho gh, sorry 2gh, that is the volume flow rate, that is the density mass flow rate, that is velocity once again. So this is the thing, that is the force. So basically like 2 rho a g h, yeah. और अब इसमें दो openings की है, so okay, good thing is proportional to h directly. So actually just 2 rho a g times delta h, अच्छा इसमें लोगों ने h ही लिया, so that is still the force in fact, yeah. So that's the thing. So C is the correct answer, I guess. Next question, 15th. I mean, hopefully it's correct. Next. A wooden block with coin placed on the top floats in water as shown. The distance L and H are shown here. Sorry, shown there. Okay. Floats in water as shown. Okay. After some time, the coin falls into the water. Then ये हाइट है, ओके. इनिशियली ये फ्लोट कर रहा है, कुछ देर के बाद में कॉइन गिर जाता है, इट्स गोना स्टिल फ्लोट ऑफ कोर्स, राइट. और ये ज़्यादा इसमें प्रोपोर्शन रहेगा, एल इज गोना डिक्रीज, राइट, या. और एच के बारे में क्या होगा, सो ओह गॉड ये थोड़ा सा अजीब होने वाला है.
सो अभी जो इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस की है, मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, राइट? सो ओके, थिंक ऑन इट, ये जो पूरा, राइट, बेस एरिया टाइम्स हाइट, दैट्स द वॉल्यूम बीनीथ द सरफेस बेसिकली, राइट? सो ये जो इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया अपन वो भी गिनने वाले बेसिकली, इज इन दैट राइट? सो ओरिजिनली जो वॉल्यूम है वाटर की वो तो सेम रहेगी, सो उसमें वी नॉट बोल दे रहा हूँ, प्लस जो इसने डिस्प्लेस की है वॉल्यूम, राइट, उसको मैं वी बोल रहा हूँ। तो इससे प्रोपोर्शनल रहने वाला है अपना एच की वैल्यू, राइट? अब जो अपन ने वॉल्यूम डिस्प्लेस की उसका एक प्रॉपर्टी की, दैट टाइम्स द डेंसिटी, right? Okay, that times g, of course. That's equal to total mass of the system times g, right? That should be the thing. So yeah, okay, v is just equal to m upon rho. Is case में capital M plus small m upon rho, right? So capital M is the mass of the block, और ये small m है mass of the coin. So this whole thing upon rho. So initially ये चीज थी, finally क्या हो गई होगी? v naught plus तो अब तो इनफैक्ट वाटर भी है और साथ में ये वाला बंदा भी है ना, सो थोड़ा बहुत उसका मास भी है। एंड ये ओके, इसका मास, इसका वॉल्यूम पता नहीं क्या होगा। एंड कॉइन जो है वो कितना, वो बड़ा है छोटा है, वी डोंट नो, सो तो मैं v1 बोल देता हूँ, राइट? कॉइन की वॉल्यूम, लेट्स अज्यूम कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ये छोटे वाले कॉइन की, राइट? बट मास फाइनाइट है, सो v1 इज वेरी निग्लिजिबल, आई वुड से। ओके, एंड दैट थिंग प्लस, राइट, तो अब क्या होगा? अब सिर्फ कैपिटल एम अपॉन रो रहेगा, राइट? ऑफ कोर्स, yeah, that's the volume displaced, so extra volume, right? I guess that should make sense. That should really make sense. So there we go, this thing. This is जो फाइनल आने वाला है, इसका जो डिफरेंस है कौन सा बड़ा है, इसलिए को वही देखना है ना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। So rho जो है is less than rho 1, that's what we're saying, isn't it? तो this thing m upon rho तो इसमें है ही, so इसमें जो difference रहेगा it's like m upon this guy minus, so this is like m upon rho 1, right? So 1 upon rho minus 1 upon, so is the first guy bigger than the second guy? That's like saying is this happening? That's like saying is this happening? That's like saying is this happening? Well yes, this is in fact happening. So हाँ, जो पहला वाला है वो बड़ा रहेगा, right? So first guy has more h value. ओके, तो अब सेकंड गाय में एच छोटा है, मतलब कि डिक्रीज हो गया, राइट? सो एच डिक्रीजेस, तो बी और डी हो सकते हैं। और क्या है, एल शुड आल्सो जस्ट, राइट, मतलब वो हटा दिया, इट्स गोना बी लाइक इट्स गोना गो अप, सो एल डिक्रीजेस एज वेल, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट 16, बेटर श्योर 1 घंटे के ऊपर हो चुके होंगे अभी तक। Okay, a block is submerged in a vessel filled by water by a spring attached to the bottom of the vessel. In equilibrium, spring is compressed. The vessel now moves with acceleration, then acceleration a less than g. The spring will come to 0 please. कहाँ पे कैसे मूव कर रहा है तो बताओ? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ओह मूव डाउनवर्ड्स, ओके, सो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर सूडो फोर्स लगाओ, राइट? जी इफेक्टिव कम हो चुका है, attached to the bottom of the vessel, huh? Okay. Initially spring is compressed, okay. और अब क्या, अब क्योंकि जी इफेक्टिव कम हो चुका है, सो ये वेट इसका कम हो जाएगा, इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा, राइट? तो स्प्रिंग का कंप्रेशन कम हो सकता है, या सो वेसल नाउ मूव्स डाउनवर्ड क्विकली। स्प्रिंग लेंथ विल इंक्रीज, ऑफ कोर्स कंप्रेशन कम होगा, it will come to 0, okay, will decrease, it will increase, of course, that's the thing. Imagine तुम्हारा a equal to g रख दिया, then spring length will be natural length, right? So yeah, next. When a block of iron floats in mercury at 0 degree Celsius, the fraction K1 of its volume is submerged, while at temperature 60 degrees Celsius, a fraction K2 is submerged. If the coefficient of volume expansion of the iron is, God, what is this thing? Gamma. And then of mercury is this thing. Ratio of K1 and K2 can be. Floats in mercury, you are saying, huh? Fraction K1 of its volume is submerged while the temperature is 60 degrees Celsius. Okay. Jab 60 degrees Celsius, then fraction K2 is submerged. The coefficient of volume expansion is this.
ओके मर्क्यूरी का और आयन का दिया हुआ है. So then the ratio of K1 and K2 can be expressed. Oh God. So कितना submerged है उसके लिए कैसे करूँगा मैं? Density of the solid times volume submerged, right? That's equal to volume total. Oh sorry, it's density of water, not solid, liquid. So total volume times density of the solid. So you know total. So volume submerged upon volume total. That's equal to density of solid upon density of liquid, right? Okay. So right, K1 is just equal to rho 1 upon rho 2. So if we get rho Fe upon rho mercury, and then K2 is just equal to, so rho Fe initially था, but अब क्या हो गया, अब इसका अपन ने चेंज कर दिया, right? इसका वॉल्यूम एक्सपांशन हो गया by gamma, right? So now it's just going to be like, yeah, okay, जो डेंसिटी थी उसमें डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है वो हो गया है जो इनिशियल वॉल्यूम that times 1 plus gamma t, right? So binomial theorem is going to be like 1 minus gamma Fe, right, times delta t. I guess that's correct. And then यहाँ पे आ जाएगा you know rho hg, and then similarly 1 minus gamma hg f delta t, whatever, right? This thing, I guess. So yeah, अपने को चाहिए क्या है वैसे K1 ratio K1 and K2, K1 is to K2, that is K1 divided by K2, right? It's gonna be this thing 1 minus gamma hg delta t upon 1 minus gamma fe delta t, which can also be written as 1 plus gamma fe delta t upon 1 plus gamma hg delta t, right? Yeah, sure. Yeah, that should be the thing. So कौन से इसमें ओके आई गेस ए इज करेक्ट और नेगेटिव दोनों में कहीं नहीं आ रहा है, राइट? देन इट्स ओनली द करेक्ट वन. सो ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 18th. Is the masses and radii of Earth and Moon are m1, r1, and m2 at r2 respectively. Okay, their centers are at distance d apart. The minimum speed with which a particle of mass m should be projected from a point midway the two centers so as to escape to infinity. Ooh. और कहाँ पे तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, इससे तुमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, राइट? परपेंडिकुलरली और समथिंग, एंड इट शुड गो टू इंफिनिटी. यू आर सेइंग इसलिए हो रहा है. सेंटर्स आर डी अपार्ट ऑफ कोर्स, सो डी अपॉन 2 डिस्टेंस पर है. जस्ट डू दिस थिंग, हाफ एम वी स्क्वायर. ओ ठीक है, जस्ट वी स्क्वायर डाल दिस. हाफ वी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू पोटेंशियल्स, सो जी एम अपॉन आर क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2, राइट? दैट्स सो m1 आएगा इसमें पहले तो बिकॉज अर्थ, राइट? और रेडाई का अपने को क्या काम है आखिर? आई डोंट सी इसमें कोई काम है. And you got like gm2 upon d upon 2, right? Yeah, which will be 2g upon d times m1 plus m2, I would say, of course. So क्या हो जाएगा, v is equal to square root of 2 तो बाहर निकाल लेंगे, square root of 4g upon d, and then ठीक है ना, कौन सा आंसर है ये? b. नेक्स्ट क्वेश्चन 19th. 19th is in order to shift a body of mass m from a circular orbit of radius 3r to a higher orbit of radius 5r around the earth, the work done is circular orbit of radius 3r to a higher orbit of radius 5r around the earth. 3r से 5r, fine. The work done, or it's orbiting, right? So like the total energy is just negative, right? So negative 1 upon 2 of the potential energy, right? Yeah. So negative gm upon 2 small r, that's the potential energy. So इसका अपने को चेंज चाहिए. टोटल वर्क डन इसको ऊपर भेज रहे हो, सो तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही है? आर तुम्हारा राइट 1 अपॉन आर तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, बट ये पूरा है वो इंक्रीज हो रहा होगा. gm अपॉन 2 1 अपॉन इनिशियली क्या है 3r, फाइनली क्या है 1 अपॉन 5r, राइट? तो ये हो जाता है 2 upon 15, so gm upon 15r, I guess, which is, और वो है ही नहीं यहाँ पे, wait, something went wrong. 3r से 5r, right? Around the earth, of course, that should be the thing. What's going on? ये क्यों नहीं काम कर रहा? It should have worked. यहाँ पे है क्यों नहीं? 2/15th. What? No, that can't be the thing. This can't be the thing.
Oh, इसको मास से मल्टीप्लाई करना है, that's for sure, right? Like v square is uh you know g upon r, इसका 2 times, right? That's the, wait, क्या मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? Okay, half m is equal to this guy, sure. Oh no, it's just this guy, of course. That's v square, and then you got half m times v square, और यहाँ पे क्या होगा? Just g m upon r, right? So ये negative में आएगा, that's by this guy, right? So yeah, of course, that's how it's supposed to be. Yeah, यहाँ पे upon to आना चाहिए, so it should be actually, it's not supposed to be c. I don't know, इसका कुछ भी अजीब है. Next question, 20. अरे मर ना यार. 20. Figure shows a planet in elliptical orbit around the sun. Where is the kinetic energy of the planet maximum? Kinetic energy, of course, at P1. What's the big deal? So A. Easy था. क्या बोलते उसको? पेनम्रा बोलते हैं, I guess. Wait, नहीं, कुछ तो मैं और मिक्स कर रहा हूँ. एपोगी और पेरोगी रहता है ना? Yeah, I guess एपोगी ये है and this is पेरोगी or something like that. I don't know. Okay, next. A small steel ball falls through a syrup with speed 10 centimeter per second. If the steel ball is given an upward force equal to the effective weight, it would move upward with a speed of an upward force equal to its effective weight. Effective weight. Oh, हाँ. So इसका जो effective weight, इसको मैं W dash बोल रहा हूँ. Right, so viscous force है that is equal to this guy at the point, right? Oh god. Okay, it's quite complicated, right? So that's equal to the viscous force. Right? Yeah. Okay, it's moving down with 10 meters per second. This is weird. It's effective weight in the water, of course. Wait, it just won't move, right? Matlab, it will move upwards with speed of 0, of course. Why would it even? Yeah, what's even the matter? Effective. It's gonna move upward with 0. What's the big deal about it? I don't get it. So 21st ka, t, it will move up with the speed of 10. Yeah. For I guess yes, that should be the thing. Or effective weight, that's, yeah, of course, just okay, I know that. Next you got 22. 22 is a spherical ball falls through a viscous medium with terminal velocity v. If this ball is replaced by another ball of the same mass but half the radius, then the terminal velocity will be higher. Sorry, okay, will be. Neglect the effect of buoyancy. Okay, spherical ball नीचे गिर रहा है, terminal velocity v, क्या 6 pi r viscosity velocity, right? This is the force that's equal to mg, or like 4/3 pi r cube. Density same है क्या? Same mass. Okay, so mg basically, right? So नीचे ले रहा है, and then this thing is, yeah, basically viscous force. So same mass but radius को क्या कर दिया इन लोगों ने? Half the radius. Like, okay, the thing, velocity is proportional to 1 upon r. Radius को half करो, velocity double हो जाएगी. Terminal velocity will be 2 times. So B is the answer. Next question, 23. Okay, a 5 kg rod of square cross section with 5 centimeter side and 1 meter long is pulled along a smooth horizontal surface by a force applied at one end. Rod है 5 kg का, this is 5. Okay, square cross section. What? Oh, okay, so like ऐसा rod है, square cross section. Fine, understandable. So it's 5 centimeters. करना क्या है इसको अपने को? 5 centimeters side and ठीक है ना? So length के लिए, right? Okay, area के लिए edge length कितनी है अपनी? 5 centimeters, like 5 times 10 power negative 2. So area is going to be 25 times 10 power negative 4, whatever. Length कितनी है? 1. Okay. Mass है 5 kg. It's pulled along a smooth horizontal surface by a force applied at one end. The rod has a constant acceleration of, so acceleration कितनी है? 2 meter per second. So this means like the force था
That is equal to 2 times of kitna 5, right? A 5 kg rod. So 2 times of 5. Wait, we don't care about that actually, right? Determine the elongation in the rod. Young's model अपने elongation करना है. No big deal. So जो हर इसका area element रहने वाला है, suppose it's at distance x from here. So x upon L times mass, right? And that times acceleration, that's the tension over there. This thing upon the area, oh, use acceleration A, यहाँ पे नहीं use करना चाहिए था. So just skip that. Okay, A is what? The acceleration is 2. Cool. So yeah, this is the force upon the area. That's the stress. Okay, upon the Young's modulus. Yeah, okay, Young's modulus दिया हुआ है आपने को. Young's modulus is 5 times 10 power 9, right? SI units. Okay, this will be the the strain. So this times dx, that's the extension produced. Okay, अपने इसको integrate करना है from x is equal to 0 to L, I guess. So ma upon L a y, and then x is like this, L squared upon 2, of course. Let's calculate. So mass कितना दिया था अपने को? Mass is 5 times area, sorry, ये a will be 2 times L is 1 upon 2 times of capital A is just this guy, 25 times 10 power negative 4 times Young modulus, which is 5 times 10 power 9. Okay, this is negative 4. ये गया. It is 1 upon 25 times 10 power कितना 5. Okay. God, what is this? It's like 10 power 7 कर दो इसको and 0.25 कर दो, right? It's like 1/4 times this thing basically. So you check 4 times 10 power negative 7 basically. Yeah, that's the extension. So itne meters. And what do you want in micrometers? 0.4 micrometer. So C is the answer. Non-zero but containment from look at this guy. Look at B. Oh god, seriously. Okay, that's the thing. Next question. 24th. 24th is two bubbles of different radii are in communication with each other. What? Then air flows from the larger bubble into smaller bubble till both bubbles acquire the same size. Larger to smaller, नहीं रे. Smaller में ज़्यादा pressure रहेगा ना, so it's gonna go in the opposite direction. Air flows from smaller bubble to larger bubble, and the larger bubble grows in size with decrease in size of the smaller bubble. Yeah, so B is the thing. Eventually जो smaller bubble रहने वाला है, so राइट तो तुम्हारा जो वो स्ट्रॉ जो भी है तुमने जैसे भी किया है, सो स्मॉलर बबल डिक्रीज होते 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 फाइनली राइट जिसमें जो प्रेशर है वो यहाँ पे मैक्सिमम रहने वाला है, राइट. एंड एट दैट पॉइंट ये काफी बड़ा हो जाएगा वॉट एवर, बट आफ्टर दैट इट्स एक्चुअली गोइंग टू लाइक गो इनसाइड और समथिंग. या दैट्स द थिंग. सो ये जो सरफेस रहेगी वो ऐसी हो जाएगी और फिर यहाँ पे ऐसा होगा. एंड yeah, that's how it's going to be. और अब ये इसका जो इंक्रीज का रेट है वो कम हो जाएगा बिकॉज इसमें वॉल्यूम जो है वो कम रहने वाली है इसमें जाने वाली. yes, that's the thing. Quite irreversible if you ask me. So 24 is like that. Air doesn't flow but signs of bubble changes. What? Right, okay. आई एम अज्यूमिंग कि जो तुम्हारे रेडाई है वो एक्चुअली लाइक बाहर है, लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा बाहर है ट्यूब से, देन इट्स गोना वर्क, अदरवाइज नहीं. 24 का शायद से भी है. 25th. A glass rod of diameter something inserted symmetrically into a glass capillary tube of radius something. Rod of diameter कितना है 2, so radius जो है कैसा फिगर कैसे होगी? ग्लास रॉड inserted into a glass capillary. Okay, with R equal to 2 millimeter. Oh, दोनों का सेम है इनफैक्ट, सो एकदम टच कर रहा है आई गेस. Oh, sorry, it's the radius 2 millimeter, not the diameter. Okay, cool. Then the whole arrangement is vertically dipped into liquid having surface tension something. The height to which liquid will rise on the capillary. Oh, I guess तुम ऐसा बोल रहे हो कि इसको थोड़ा सा नीचे ले लो like this, और फिर यहाँ पे surface पे ऐसा आएगा. Okay. The height to which the liquid will rise in the capillary, okay, is G is equal to this thing, density of liquid is that. Assume contact angle to be 0 and length of capillary tube to be
long enough. Okay, length of capillary tube long enough. ठीक है ना, तो ये जो है इस assume contact angle 0 है, that's the main thing. So 2 pi small, इसको मैं कैपिटल R बोल रहा हूँ, 2 pi small r times surface tension, या ये upward force है प्लस 2 pi कैपिटल R times surface tension, right? वो भी upward force है इस पे, right, holding this completely, and that's equal to जो भी इसका डेल्टा p होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल रहेगी, राइट, वहां से भी तो हाइट गेन नहीं है, सिस्टम भी रो जी एच, जस्ट लाइक दैट, रोजिश नहीं, मुझे प्रॉपर करना चाहिए इसको, जो इसका बेस एरिया रहेगा लाइक पायर, गॉड ये बहुत लंबा होने वाला है, वी हैव टू डू इट. So 2 pi t times r plus r, that's equal to the base area is just pi times capital R square minus small r square. So r minus r times r plus r. That times ये जो भी height रहेगी, right? That's the volume, and that times the density, and that times gravity, right? Yeah. So यहाँ से ये तो गए, it's just this thing. ये pi भी मर गया. So like 2t upon capital R minus small r, that's equal to rho gh. I mean, I assume it's nothing, but whatever. Okay, अपने करना क्या, height to which it will rise, so h basically. That's gonna be like 2t upon ये, we know it's just gonna be 1 millimeter, right? And then rho times g. चलो करते हैं. So 2 times surface tension कितना है? भाई surface tension मुझे बता दो at least. Okay, 0.72. So times 72 times 10 power -3 upon, so 10 power -3 because 1 millimeter, then density which is 10 power 3 times gravity, so gravity अपन ने 10 assume किए. Okay, cancel करो, what will this be, 49 like 144 times 10 power -4, which, right, okay, 1.44 times 10 power -2 meters, so this many centimeters. A is the answer. Next question, 26. I guess we should stop now. Okay, fine. So I'll see you guys in the next video.